Yes, good afternoon, student. So today we will see the topic that is full adder, right? 6 marks question, maybe in the examination, in the full adder, right? So in the previous video we have seen the half adder. Okay, so what is half adder में कितने inputs थे? दो input थे A and B. तो full adder में कितने inputs होंगे अभी? तीन input होंगे A, B and C in. C in is called as a carry in. ओके अगर कैरी आ गया तो हाफ एडर मतलब काम नहीं करता था लेकिन इफ यू हैव द प्रीवियस बिट हैज जनरेटेड कैरी देन यू रिक्वायर्ड 3 बिट्स ओके सो अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स 3 1 बिट बाइनरी नंबर कितने बिट्स 3 बिट नंबर ऐड 1 बिट नंबर कितने ऐड कर सकते हैं 3 ओके so that is A, B and C and there are two outputs like that of half adder. One is sum and other is carry, right? Now, only this definition you can write in the examination, right? Now, how many inputs I have told you? How many inputs I have told you? 2 inputs, right? How many inputs I have told you? 2 inputs. Wait a minute. Yes. How many inputs I have told you? 3 inputs. That is A, B and C, right? A, B and C. Now, if there are 3 inputs, how many possible combinations are there? 7. That is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 and 1, 1. At student point of view से कैसे लिखना है? 4 times 0, 4 times 1. 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, that way also you can write. Now like that of half adder what we did the addition of 2 number लेकिन यहाँ पे addition of 3 number मतलब this 0 plus this 0 plus this 0 so what is 0 plus 0 plus 0 that is 0 and carry is not generated so that I have mentioned here 0 now this 0 plus this 0 0 plus 0 0 0 plus 1 1 so sum is 1 and carry is 0 right now what is this 0 plus 1 this 0 plus 1 is 1 that answer 1 plus 0 is 1 so that the sum is 1 and carry is 0 यहाँ पे भी 0 plus 1 1 that answer 1 plus 1 is 1 plus 1 क्या होता है बाइनरी एडिशन में 1 plus 1 क्या होता है 0 and carry is 1 carry generated 1 so that I have written here 0 and carry generated here 1 again here 1 plus 0 1 that answer 1 plus 0 is 1 and carry is 0 1 plus 0 1 and 1 plus 1 is 0 and carry 1 similarly 1 plus 1 is 0 carry is 1 and this 0 plus 0 is 0 and this triple 1 that is 1 plus 1 sum is also 1 and carry is also 1 so this truth table is very much important for the examination which if the question is of 6 marks truth table के लिए 2 marks होंगे right so after writing this truth table you need to write the k-map okay equation लिखना है हमें right सम के लिए इक्वेशन लिखना है और कैरी के लिए इक्वेशन लिखना है सम का इक्वेशन क्या होगा कैरी का इक्वेशन क्या होगा राइट तो हाउ मेनी इनपुट्स वेयर देयर इन द फुल एडर हाउ मेनी इनपुट्स 3 इनपुट्स सो दैट कितने वेरिएबल का k-map लगेगा 3 वेरिएबल का द k-map डिटेलिंग आई हैव टोल्ड यू इन द अनदर वीडियो यू कैन गो फॉर दैट वीडियो सो 3 वेरिएबल का k-map मुझे लगेगा राइट सो 3 वेरिएबल का लेआउट कुछ इस तरीके से है दैट इज a बार a b बार c बार in B bar C in, B C in and B C in bar, right? And because these are the 3 inputs. Now, just for this, only consider sum वाला column. तो जो कुछ भी values यहाँ पे है 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ये यहाँ पे डालना है लेकिन डालने का तरीका कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट 0, 1, 2, 3 why it is so again I have told you in that lecture yes 4 5 6 and 7 right 6 and this is what your 7 according to this value just put 0 1 1 0 1 0 0 got it now if you look at this particular there is no possibility of pair octet and quad so you can consider these are the singular term okay these are the singular term yes
So these are what a singular term. Now for this singular term, how to write equation, student? What I have told you? Yes, इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसका इक्वेशन लिखना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी बार सी इन बार. ओके, इसका इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए बार एंड बी बार सी. इसका इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? दिस ए एंड दिस बी सी इन. इसका इक्वेशन लिखना है तो सिंगुलर टर्म का ए बार बी सी इन. ओके, सो ये जो लंबा चौड़ा इक्वेशन मिल रहा है आपको, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फाइनल फॉर्म. सो इसका कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए you can directly write the answer. So what is the answer for this sum A XOR B XOR C in? Okay, A XOR B XOR C in. Okay, 3 input वाला XOR gate आपको यहाँ पे लगेगा. Now what about this carry out? Yes, carry out. Yes, again you need to put here whatever the values are present over here. This one, this carry out में जो values है यहाँ पे डालना है, right? Again the question is 0 1 2 3 4 5 6 7. Once you put, there is a possibility of 3 pair, ये pair और ये pair. Now here you can say that what is the equation for this pair? What is the equation for this pair? How to write the equation for this pair? तो यहाँ पे कौन सा क्या आता है? यहाँ पे A आता है, रो वाइज क्या आता है? A. और यहाँ पे कितने कॉलम से? 2 कॉलम से. लेकिन कॉमन क्या है 2 कॉलम में? कॉमन क्या है? C in. तो C in. So what is the answer? A into C in. So that देखो यहाँ पे A into C in I have got. Understood? Okay. In detailing I have already told you. In detailing of K-map equation कैसे बनाना है क्या, वो दूसरे वीडियोस में है. You can go for that. ये वाले इसका इक्वेशन लिखना है, ये वाले पेयर का इक्वेशन लिखना है. तो कैसे लिखोगे ये वाले पेयर का इक्वेशन? How many rows are there? 2 rows and total number of 2s. So cancel. How many columns are there? Only. How many columns? Only 1. So that you need to consider this entire, that is BC. So what is my term? That is BCE, right? And the last pair is what? Last pair is what? This one. So how to write the equation for this one? Yes. How many rows are there? 1. That is E. Yes. And how many columns are there? 2 columns. And which is common? That is B is common in that. Look. Wait a minute. How many columns are there? No, not B. B is common there. Yes. So you need to write B. That is A into B. So that this is my A into B. Okay. Like that, you can write equation from K-map, right? So sum का equation क्या मिल गया? A XOR B XOR C and carry का AB plus BC in plus C in. That is AC in. Okay. तो ये वाला equation यहाँ पे भी है. See here. Sum का equation ये है. Sum. एंड दिस इज व्हाट द कैरी. इस सम का इक्वेशन कैसे करोगे आप? दिस इज ए एक्स और बी एक्स और सी. तो मेरे 2 इनपुट्स है ए एंड बी. तो मैंने पहले एक गेट लगाया एक्स और गेट और आउटपुट ऑफ दिस आई हैव कनेक्टेड टू द सी इन. वेयर इज माई सी इन? द डायग्राम इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट हियर. जस्ट वेट, आई टेल यू द डिफरेंट वाले डायग्राम. जस्ट वेट. Yes. So this is what the equation we have got. The sum का equation A XOR B XOR C in and AB plus BC in plus AC in. तो यहाँ पे देखो कितने कौन से गेट लग रहा है? यहाँ पे XOR गेट. तो पहले हम A XOR B करते हैं. So this is my A. So this is my A input and this is my B input, right? So A XOR B किया. तो output of this one, it is XOR with C in. XOR with C in. So this is my C in की line, right? So this is my entire sum, that is sum, right? Yes. And what about this carry का equation? पहला क्या है मेरा? पहला क्या है? A into B. So this is into है तो and गेट लिख दिया A into B. So this is my B input actually. This is my B input A into B. Okay, ये हो गया. उसके बाद B into C in. तो ये देखो ये वाला दिस इज वॉट ये है B इंटू सी इन वाला. दिस इज वॉट C in एंड ये है B, दैट इज B इंटू सी इन. ओके, एंड A इंटू सी इन. दिस इज वॉट A इंटू सी इन. ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द और बिकॉज ऑफ दिस प्लस. अभी तो एंडिंग हो गया,
ये एडिशन करना है तो I can use the 3 input वाला OR gate. OR gate. This is what you are the OR gate. Okay, and this is entire CU. So this is the entire diagram of full adder, right? Of sum and okay. Thank you.